Forgot to start my screen recording. Okay, let's take an example of the first example which we took. Let's say I'm having a stack of integers. Okay, now, so whenever you are making a stack, whenever you are creating a stack, always try to imagine in this format. You are having a shelf, a vertical shelf, vertical bookshelf. एक टेबल की तरह इमेजिन करो जिसके तुम टॉप पे बुक्स रखने वाले हो. It will make your life easier. Initially, this stack is empty. Now, suppose I want to insert book number 3. So I can insert book number 3. Now suppose I want to insert book number 5. I inserted book number 5. Suppose I want to insert book number 1. So I inserted book number 1. So how do we insert? So there's one method called as push. So st dot push val. This is the first method in which we push the element. Let's say initially stack was empty, and if I do st dot push 5, so my stack will have 5. If I do st dot push 3, so my stack will have 5, 3 in this way. I hope it is clear now. How do we make stack? Okay, so this is the first method in which we push elements or we insert elements in the stack, and we cannot directly access elements like we do in array or vectors 0, 1, 2 index wise. No, in stack only the top element or only the last element can be accessed always. Now let's move to another method that is called as pop. st.pop. Let's say you are having a stack initially 5, 3, 1, 6. Okay, these four elements are in the stack, and if you want to remove the, see what pop does. St pop removes the top element, removes the top element. So if I do st dot pop, it means that my top element, that is 6, will be removed. So my new stack will be 5, 3, 1. If I again do st dot pop, again my top element will be removed, 5, 3. I hope st dot pop and st dot push is clear to you. Both are having time complexity of big of 1. Now you won't be seeing any use case of it. Okay, what is the use case of stack? But yeah, we'll figure out it. We will talk about that use case later on. Now let's talk about third method, that is top. It returns the top element. It returns the top element. As I told you before, stack you can only access the top element. Let's say I'm having 5, 3, 1, 6, and I want to see the top element. What is the top value in the stack? This is my stack, and I want to see the top element in the stack. So I can simply do cout st.top. That's it. st.top will give you the top element, that is 6. So cout st.top will give me 6. That's it. Now let's move to. Okay, let me ask you a question. Suppose you are having a okay. I hope this is also clear. So st.top is having a time complexity of big of 1. Now one more thing. Let's talk about the last method, that is st.size. I hope by name also it is clear. It returns the size of stack. Let's say we are having a stack of 5, 3, 1. So this is a stack. So here st.size will be 3. If I insert one more element, st.size will be 6. So on. Again, it is of a big of 1 time complexity. Okay. Having same methods only. In Java and C++, we are having same methods: push, pop, top, and size. There's no difference in that. Uh, yeah, sure. Okay, left key in between. Fine. Yeah. Okay, now let's move forward.
Let me start with a very basic question to you guys. Suppose you are having a stack, and we are not going to solve it. We are going to solve it verbally. Suppose you are having a stack, elements 5, 3, 1, 6, 9, 2, and I want to access the last element. I want to find what is the first element which I inserted in stack. I want to find the first element which I inserted in stack. How would I do? Yeah, tell me. How would I do? Hmm. Hmm. Exactly. So we want to access the first element which I inserted in my stack. It means that I have to remove all the elements because we are not having any indexes in stack, right? We are not having 0, 1, 2, these indexes in stack. Stack has only these four methods. That is, we can push, we can remove from the top, we can push on the top, we can see on the top, and we can see on the side. So everything is related to top element. So if I want to access the bottommost element or the first inserted element, how would I do it? I have to remove all the elements that are on the top. First, I will remove this, then this, then this, then this, then this, until when I will keep on removing the top element until my stack size is 1. Okay, stack dot. No, no, no. We have to find the first element which is inserted. So what I suggested, okay, we will keep on removing the top elements. So I want to find the first inserted element, that is 5, right? So as someone told in the answer, so first what I will do, we will remove the top element. When we removed it, to is removed. How we will remove? By st dot pop. So 2 is removed, right? Now again we will remove st dot pop, so 9 will be removed. Again we will remove st dot pop, so 6 will be removed. In this way, we'll keep removing the top element until my stack size is 1. Now my stack size is 1, it means that I'm only left with the one element, and I'm pretty sure that is the first element which I inserted. Is it clear? क्योंकि स्टैक में whenever I insert an element in stack, it goes to the top. तो मैंने जो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया होगा, इट विल बी ऑन द बॉटम मोस्ट पोजिशन. इज इट क्लियर ना? बताओ. अब क्लियर है क्या? सो व्हाट आई विल डू, okay, so what I will do, I don't want to, while st dot size is greater than 1 or is not equals to 1, okay, I will keep removing element from the top. That's it. So when my stack size is 1, it means that I'm only having one element, and I'm pretty sure that is the first element which I inserted because that element is the bottommost element. So after removing my top element, my bottommost element will be top. That is st dot top. Anyone having any doubts in this? Anyone? What I'm doing? Anyone having any doubts in this? किसी को डाउट में? बताओ किसी को भी डाउट, कोई भी डाउट, एनी डाउट? Are you sure about this? Okay. Now let's do a very good classical problem, very easy classical problem. My bad, valid parenthesis. And I'm pretty sure that most of you guys would have done it earlier. But yeah, it's very classical and I don't want to leave it. And let me update into that sheet also. 1 second, guys. Meanwhile, you can give it a try. It's 51. We will discuss it 53.
Okay, fine. I will update it. Okay, now you guys give it a try. Give it a try करो. It's 52. We'll discuss it 54. Okay. थोड़ा सोचो कैसे करेंगे. And it's a very nice problem. Mm-hmm. Top. Anyone having any ideas? क्या? किसी को कोई ideas आ रहे क्या? I know means I'm doing very less time, but yeah. Are you having any idea for this? Okay. 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 Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay. 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 So what is our space complexity of it? Big of n because we are using n size space, right? Okay. And time complexity also big of n, right? Now suppose interview asks you, hey, you don't have to do it in big of n. You have to do it in big of one space complexity. How will you do? Ah, I know. I'm not saying कि big of n, big of one time complexity. I'm saying big of one space complexity. Meanwhile, you think, अरे why did you give up यार? कितना टाइम हो रहा है अभी? तुमने 1 मिनट में गिव अप कर दिया हद है. चलो ठीक है. Okay. Now let's discuss. It's a very classical problem. ठीक है. And let's discuss for the simpler version. Now let me discuss for this one. Let's say you're having a any parenthesis string. Okay. So what is a valid parenthesis sequence means? Like this is a parenthesis sequence, and how do I say that it is valid or invalid? A valid parenthesis sequence is a valid if every opening bracket it has a corresponding closing bracket. Okay, let me explain. And that too after it. Let's see. Like for this opening bracket, we have a closing bracket this, right? This is the मैंने यहाँ पे closing bracket आ गया. For this opening bracket, we have a closing bracket this. तो अगर मैं okay, let's me cancel this, ये cancel हो गया, ये इससे cancel हो गया. Similarly, this got cancelled with this. In finally, we have written an empty string. Hence, this parenthesis string is called as valid. Let me talk about another example. Let's say this. Is this valid? Kya? No. Why no? For this opening bracket, we have this closing bracket. But for this opening bracket, we do not have any closing bracket. Right? Okay.
Now let me take an example. Is this valid parenthesis string? No. Why no? For this opening bracket, we have this closing bracket. For this opening bracket, we have this closing bracket. But what about this closing bracket? Do we have any opening bracket cap before? No. So this is also not, this is also not, this is. Okay, let's take another example. Let's take this. Now you guys tell me, is it valid or invalid? Valid. How many of you is saying that it is valid? You guys raise your hands. How many of you are saying? Okay, three of you. What about others? What about Shrutika? What about Pulastya? What about Kana? What about Divya? What about you guys? It's valid. Let me show you. देखो सिंपल सा ट्रिक है. कोई भी एक पैरेंथेसिस वैलिड है कि नहीं, तुम्हें हर एक ओपनिंग ब्रैकेट के लिए उसके जस्ट नियरेस्ट क्लोजिंग ब्रैकेट ढूंढना है उसके बाद बेसिकली. सो फॉर दिस ओपनिंग ब्रैकेट वी हैव दिस क्लोजिंग ब्रैकेट. तो ये कैंसिल हो गया राइट. नाउ फॉर दिस ओपनिंग ब्रैकेट वी हैव दिस क्लोजिंग ब्रैकेट. तो ये और ये भी कैंसिल हो गया. फॉर दिस ओपनिंग वी हैव दिस क्लोजिंग. फॉर दिस ओपनिंग वी हैव दिस क्लोजिंग. फॉर दिस ओपनिंग वी हैव दिस क्लोजिंग. तो हर एक ओपनिंग के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट था. एंड व्हेन वी कैंसल ईच पेयर वी गॉट अ एम्प्टी स्ट्रिंग. तो ये वैलिड है. बट ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था, फॉर दिस ओपनिंग वी हैव दिस क्लोजिंग. फॉर दिस ओपनिंग वी हैव दिस क्लोजिंग. तो ये सब तो कैंसिल हो गया. बट दिस closing bracket does not have any opening bracket. So it is invalid and it is valid. Let me talk about this example. ये बताओ, is it valid or invalid? Is it valid or invalid? Invalid. ये ओपनिंग के लिए ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग के लिए ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग के लिए आगे कोई क्लोजिंग है क्या? नहीं. एंड इस क्लोजिंग के लिए आगे इधर कोई ओपनिंग है क्या? नहीं. So it is invalid. So this is also invalid. Now I hope everyone is clear about valid and invalid parenthesis strings. Okay? Now let's try to implement it. कैसे करेंगे इसको? Let's try to think about it. From the previous example which we took, see, अभी यही एग्जांपल लेके हम लोग let's try to think how we can do it. For this opening, I'm not sure which will be closing, right? For this opening, I'm not sure which will be closing bracket. Now, when I came to this opening, okay, now I came to this closing. मैंने बोला just हर एक opening की just nearest वाला closing. For this opening, this is the nearest closing bracket. It means that it is forming a pair. It will get cancelled. Now, for this opening, we are having this closing bracket. So it is forming a pair. It got cancelled. Similarly, for this opening, we have this closing. It is forming a pair. Cancelled. Now, we are having this closing bracket. And we were having this opening bracket earlier. It means that this closing bracket is for this opening bracket. So it got cancelled. Similarly, we are again having a closing bracket. And we were having one opening bracket left. It means that this closing bracket is for this opening bracket. So it got cancelled. मतलब लॉजिकली हम लोग को समझ में आ गया कि व्हाट वी आर डूइंग, बट हाउ डू वी इम्प्लीमेंट इट? दैट इज अ बिग टास्क. How do we implement it? See, we were having opening brackets continuously. Now, when we came to closing bracket, right, we got a closing bracket. So it will form a pair with the nearest opening, with the nearest left opening bracket. So इसका nearest left opening bracket ये रहा. It is forming a pair. So मैंने इस पेयर मतलब ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है, तो मैंने इसको इरेज कर दिया यहाँ से कि भाई ये अब हट ही जाओ तुम. If you notice what I'm doing, I'm okay. What I'm doing, I'm continuously pushing my opening brackets. I pushed my opening bracket.
pushed my opening bracket, pushed my opening bracket. Now I came to this closing bracket. This stack only has opening brackets. Now when I came to this closing bracket, now I have to find कि भाई सबसे पास वाला कौन सा ओपनिंग ब्रैकेट है. व्हेन आई केम टू दिस क्लोजिंग ब्रैकेट आई हैव टू फाइंड लेफ्ट में सबसे पास वाला ओपनिंग ब्रैकेट कौन है. दैट इज स्टैक टॉप एलिमेंट. इट मीन्स दैट वी आर हैविंग थ्री ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड जो सबसे पास वाला होगा लेफ्ट में दैट विल फॉर्म अ पेयर. सो इसके टॉप वाला जो एलिमेंट है इट इज फॉर्मिंग अ पेयर. So instead of inserting this into stack, I am removing this element from the top. It means that this opening and this closing is forming a pair. So मैंने इसको remove कर दिया. See, now my stack has only two opening bracket. And that is for this. Now let's go to next character. This character is opening bracket, so we'll push it. Now let's go to next character. Next is now closing bracket. क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए मुझे ओपनिंग ब्रैकेट चाहिए पहले. सो नियरेस्ट ये है एंड दैट इज ऑब्वियसली स्टैक का टॉप एलिमेंट. सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव दैट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक क्योंकि भाई आई एम गोइंग टू फॉर्म अ पेयर एंड डिलीट इट. सो मैंने स्टैक के टॉप एलिमेंट से रिमूव कर दिया उस एलिमेंट को एंड नाउ दिस पेयर इज गॉट डिलीटेड. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट. इट इज अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट. नाउ आई हैव टू फाइंड द नियरेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट ऑन द लेफ्ट. Here it is, and that is a stack a top element. So I will form a pair and delete it. It means that I will remove the top element from the stack. So ये pair बनाया, remove कर दिया. Now let me go to next element. Same change, remove कर दिया. If you notice, in the end my stack is empty. It means that हर एक opening bracket के लिए closing bracket था आगे या फिर हर एक closing bracket के लिए एक opening bracket पहले था. So we were having pairs. तो that's how मेरा stack empty हो गया. Now let's take another example where this will be not the case. Let's take an example of this. Okay. So हमारा तरीका क्या था? We are going to push opening brackets. यहाँ तक push कर दिया. Now we came to closing bracket. तो मुझे इसके नियरेस्ट वाला ओपनिंग ब्रैकेट चाहिए. दैट इज स्टैक का टॉप एलिमेंट. स्टैक का टॉप एलिमेंट इज दिस. इट इज फॉर्मिंग अ पेयर. डिलीट मतलब स्टैक का टॉप एलिमेंट मैंने रिमूव कर दिया. वन सेकंड गाइस. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट. अगेन वी वांट टू फॉर्म अ पेयर. वन सेकंड बोल. सॉरी, मैं बोल रहा हूँ रंजन आ रहा है. अभी अभी नहीं आएगा. उसको वो उसका इंटर्न खत्म हो गया 1 महीने, मतलब ज्वाइनिंग 1 महीने बाद में. उसे 2 ट्रॉली रखनी होगी, तो बोले भी आपके रूम में जगह है क्या? मतलब बट वो बता रहा हूँ कि आ रहा है वो. हाँ माय बैड. अगेन फॉर दिस क्लोजिंग ब्रैकेट हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट चाहिए. वी वांट ओपनिंग ब्रैकेट. नियरेस्ट तो यही है क्योंकि वो पेयर बना के कैंसिल हो गया था. एंड दिस ओपनिंग ब्रैकेट इज स्टैक का टॉप एलिमेंट. सो स्टैक का टॉप एलिमेंट रिमूव्ड. दिस पेयर removed. Now let's come to this closing bracket. If you notice, for this closing bracket, we are not having any opening bracket. कैसे पता चला? Because we are not having any element in stack. मतलब it is not possible to form a valid parenthesis. Yes, it is true. ये valid है क्या? नहीं है. Okay. Now let's take different example. Let's take this example. Okay. Again same thing. Push opening brackets. यहाँ तक मैंने पुश कर दिया. क्लोजिंग पे है, टॉप एलिमेंट्स रिमूव किया. नेक्स्ट पे गए, क्लोजिंग पे है, टॉप एलिमेंट्स रिमूव किया. नेक्स्ट पे है, इट वॉज ओपनिंग ब्रैकेट, डायरेक्टली स्टैक में पुश कर दिया. नाउ आई हैव ट्रैवर्स्ड माई स्ट्रिंग कंप्लीटली. बट इफ यू नोटिस माई स्टैक हैज वन एलिमेंट लेफ्ट. इट इज नॉट एम्प्टी. इट मीन्स दैट एक ओपनिंग ब्रैकेट है जिसको अपना क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिला. राइट. दिस ओपनिंग ब्रैकेट डज नॉट हैव एनी क्लोजिंग ब्रैकेट आफ्टरवर्ड्स. इट मीन्स दैट इट इज इनवैलिड. So दो केस हुआ. पहला केस, if stack is not empty, then it is also invalid. And if for any closing bracket I'm not able to find any opening bracket or for any closing bracket my stack is empty, then also it is invalid. I hope तुम लोग को explanation समझ में आ गया. Everyone is able to understand the explanation? Yes or no? सबको समझ में आया? Crystal clear है सबको? Because I don't want to explain it again. मतलब समझाना है मुझे. अब जितना समझना समझ लो.
It is very base for that stack. अगर stack topic अगर ये समझ नहीं आया then you are going to miss everything. किसी को कोई रत्ती सा भी डाउट है पूछ सकते हैं कभी छोटा छोटा डाउट आई एम रेडी टू एक्सप्लेन इट अगेन बट डोंट स्किप दिस किसी को कोई डाउट है नो किस किस को समझ में आ गया हैंड रेस करो एक बार हाँ प्लस थे डाउट है क्या प्लस थे हाँ देखो तुम लोगों को डाउट होता है तुम डायरेक्टली माइक ऑन करके पूछ सकते हो एट दैट इंस्टेंट ठीक है देयर इज नो सच कि तुम्हें चैट में लिखना है या फिर तुम्हें हैंड रेस करना डायरेक्टली ऑन योर माइक एंड आस्क ओके नाउ लेट्स कोड इट I will not be coding for this okay this is your assignment I would be coding for the problem which I solved uh, this one mm, ओके चलो यही करते हैं अभी यहाँ पे ट्विस्ट है कि अपने पास ब्रैकेट्स के अलग अलग सीक्वेंस है देखो ब्रैकेट के अलग टाइप्स है ओपनिंग सिंपल हुआ कर्ली हुआ स्क्वायर हुआ सो हमें स्क्वायर के लिए स्क्वायर वाला चाहिए कर्ली के लिए कर्ली वाला सिंपल के लिए सिंपल वाला सो वी नीड सिंपल फॉर सिंपल क्लोजिंग वी नीड सिंपल ओपनिंग फॉर कर्ली क्लोजिंग वी नीड कर्ली क्लोजिंग सिमिलरली फॉर स्क्वायर क्लोजिंग वी नीड ओपन क्लोजिंग सो देयर इज अ ट्विस्ट सो let's code it I don't want to code but yeah stack character st I made a stack which will store only opening brackets so for int I is equal to 0 I less than uh, so what I'm going to do I'm going to traverse to all those characters and if it is opening bracket means my si equals to either opening simple opening or si equals to simple so curly opening or si equals to square opening. If any of the case is present, then I will push that character. Else if, let's say, my this element is closing. So for this closing bracket, for the simple closing bracket, I want simple opening bracket. So if st dot size equals to 0, suppose I do not have any element in stack, या फिर st dot top is not equals to this opening bracket. Let's say मेरा स्टैक का टॉप एलिमेंट ये है ठीक है अभी मतलब मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट है ठीक है ये सिंपल वाला लेट्स से आई डोंट हैव एनी एलिमेंट इन स्टैक मतलब इसके लिए तो कोई है ही नहीं रही इसके लिए तो कोई है ही नहीं ओपनिंग ब्रैकेट पहले बट लेट्स से है स्टैक का साइज में एम्प्टी नहीं है लेट्स से मेरा स्टैक के टॉप एलिमेंट में ये है कर्ली ब्रैकेट है इट डज नॉट मेक एनी सेंस राइट फॉर सिंपल क्लोजिंग वी नीड सिंपल ओपनिंग सो अगर स्टैक का साइज 0 है और माई स्टैक टॉप एलिमेंट इज नॉट दिस ओपनिंग ब्रैकेट it means that I'm not able to find closing bracket for it so I will return false same goes for other things if si equals to curly braces closing curly bracket same thing कर लेंगे सेम चीज ऐसे इसके लिए भी अगर स्क्वायर क्लोजिंग है तो तुम्हें स्क्वायर ओपनिंग चाहिए होगा दैट्स इट या फिर लेट्स से इन द एंड my stack is not empty after traversing all the strings and if my stack is not empty मतलब मेरे पास कोई ना कोई ओपनिंग ब्रैकेट बचा हुआ है then also return false in the end return true I hope it is clear let me run it and let me submit it wrong answer wow wonderful okay what I did if si equals to opening si equals to this si equals to this if any other case follows push it pushed else if si equals to closing and my stack is 0 or stack top is equal to this how I'm getting false here first I pushed my opening bracket that's it
पहले मैंने ओपनिंग ब्रैकेट पुश किया अगर है तो, देन आई ओके, या तो क्लोजिंग हो सकता है सिंपल, या क्लोजिंग होता है कर्ली, या फिर क्लोजिंग हो गया स्क्वायर. डिड आई मिस्ड इट क्या? व्हाट आई डिड रॉन्ग? स्टैक का साइज अगर जीरो है तभी फॉल्स, या फिर स्टैक का टॉप एलिमेंट नहीं है. Hmm, क्या गलती हुआ? कुछ कुछ हुआ क्या? Oh, my bad, my bad. I'm not popping. I'm not popping. So I have to pop also, right? My bad, guys. Let me run it again. अभी सिखाया था ना कि पेयर मिलेगा तो वो एलिमेंट रिमूव करना है. तो मैंने रिमूव ही नहीं किया था, पॉप किया ही नहीं था. सबमिट एंड इट इज गोइंग टू बी करेक्ट. एक्सेप्टेड 100%. Memory is not 100%. Now, this will be your home assignment. I have used n size stack. So stack this space complex stuff big of n. But you have to do it in big of one space. How would you do? This is your home assignment. ठीक है. Now let's move to another problem. Continue. Remove. Okay. This is again nice one. Read it. This is exact replica of the previous problem. Okay. Read it carefully. And time is 10:13. I will give to 10:16. And afterwards, I want solution from you guys. Everyone, from every one of you. Sorry, 10:17. I will ask from 10:17. And after that, we will do one good problem of step. किसी को क्वेश्चन रीड करके समझ में आया कुछ कि क्या इक्वलेंट, क्या मतलब क्या सेम है पिछले जैसा? ओके. व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्स ऑफ इट? कैन यू डू इट इन बिग ऑफ वन? अच्छा, प्रीवियस वाले का तुम्हें बिग ऑफ वन सोल्यूशन आया? बिग ऑफ वन स्पेस का. बाकी लोग ट्राई करो इस साल को, तो तब मैं सुनाता हूँ उसका बिग ऑफ वन कैसे है. सुनना ध्यान से. आई गेस मैंने एक लड़की को भी बोला था करने के लिए, जिसने कर लिया था. मैं इसके लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर दिस एग्जांपल. ठीक है. सिंपल ब्रैकेट्स वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं. ठीक है. आई एम गोइंग टू हैव टू वेरिएबल्स ओपन क्लोज. ठीक है. ओपन ओपन इज एन इंटीजर वेरिएबल इनिशियली जीरो, यानी क्लोज इज आल्सो इनिशियली जीरो. इट मींस दैट अब तक कितने ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, अब तक कितने क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं. मैं इस पे गया ओपनिंग ब्रैकेट, तो सो आई डिड ओपन प्लस प्लस. मैं इस पे गया अगेन ओपनिंग ब्रैकेट है तो ओपन प्लस प्लस, सो नाउ माय ओपन इज 2.
दो ओपन हो गए, ठीक है। अब मैं इस पे गया, क्लोजिंग ब्रैकेट है, सो क्लोजिंग वन हो गया मेरा। इफ यू नोटिस, ओपन अभी तक टू है, क्लोजिंग वन है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसके लिए मेरे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट है, बिकॉज मेरे पास दो ओपनिंग ब्रैकेट्स है, क्लोजिंग अभी तक वन हुआ है। लेट मी मूव टू नेक्स्ट ब्रैकेट, अगेन इट इज क्लोजिंग। सो ओपनिंग अभी टू है, क्लोज ब्रैकेट्स भी टू हो गया। मतलब इसके लिए मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट हो गई, सॉरी इस क्लोजिंग के लिए मेरे पास एक ओपनिंग हो गई, क्योंकि मेरे पास ओपनिंग भी दो है, क्लोजिंग भी दो है ना। सो ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। ओपनिंग क्लोज, ओपनिंग जीरो, क्लोजिंग जीरो। इस पे गया, क्लोजिंग हो गया वन। इट मीन्स दैट इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट जीरो है और क्लोजिंग ब्रैकेट वन है। नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स। इट मीन्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे गए, ओपनिंग वन हुआ, यहाँ पे गए, ओपनिंग टू हुआ, यहाँ पे गए, क्लोजिंग वन हुआ, यहाँ पे गए, क्लोजिंग टू हुआ। अभी तक मामला सेट है, दो क्लोजिंग दो ओपनिंग। यहाँ पे गए, ओपनिंग तीन हो गया, पूरा स्ट्रिंग ट्रैवर्स कर लिया। नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट इज नंबर ग्रेटर देन नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट, इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल भाई। मतलब मेरे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट बच गया। सो आई होप यू कैन। हाँ हाँ। Then you are saying that we have to maintain six variables, right? हाँ। हम्म। हम्म। Okay, my question was for this simple brackets only. Right. My question is for simple. Okay, for that we cannot do it in big of one space complexity, I guess. Uh, One second. Let me think something else. Mhm. इसको मैंने maintain किया. If I maintain that, uh, okay, because I want to maintain. We cannot do that. For this only we can do in big of one. Sorry, my bad. I guess I was thinking something else. That time. Fine. But mhm, 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 exactly. Mhm, mhm. हाँ, then it makes no sense, right? You're removing the elements and you are rearranging the string, so it makes no sense. Exactly. So what makes sense? It will work like that, but yeah, there's no sense for that. But यार किसी ने तो मुझसे पूछा था सवाल कि ठीक है फाइन, आई हैव टू फिगर आउट। ओके, ये बता, व्हाट अबाउट दिस? आई गेस सबको आ गया होगा यार, ये तो कुछ था ही नहीं सवाल में। किस किस को सवाल समझ में आ गया, ये बता मुझे। एवरी वन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट? व्हाट अबाउट अदर्स? पुलस्त्या, श्रुतिका, व्हाट अबाउट यू गाइस? तुम लोग को सवाल समझ में आया? दिव्या, बताओ। व्हाट अबाउट यू गाइस? पुलस्त्या, दिव्या, श्रुतिका, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बताओ, लॉजिक बताओ, व्हाट यू थिंकिंग, क्या सॉल्यूशन होगा तुम्हारे हिसाब से? टेल मी। बताओ। सी, सवाल क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियरली, क्योंकि वहीं से मेन चीज सॉल्व हो जाता है। सवाल ये था कि हमें एडजेसेंट कैरेक्टर्स को रिमूव करना है, ठीक है। एंड अगर रिमूव करने के बाद, लेट मी एक्सप्लेन, अगर रिमूव करने के बाद जैसे कि सपोज ये दोनों सेम है, राइट? सो इफ आई विल रिमूव इट,
जैसे मैंने इसको रिमूव किया, लेफ्ट में ये रहा, राइट में ये रहा, so these two will get appended, so my string will look like this. Again, ये दोनों कैरेक्टर सेम है, रिमूव इट, लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में ये, सो माई स्ट्रिंग विल लुक लाइक दिस. तो फाइनली मेरे पास फाइनल स्ट्रिंग है सी ए, दैट्स इट. आई होप ये सवाल था, आई गेस सबको सवाल समझ में आ गया. सवाल ये था, इफ एनी टू एडिशनल कैरेक्टर्स आर सेम, वी विल रिमूव दैट पेयर एंड वी विल कंबाइन लेफ्ट एंड राइट पार्ट. ठीक है, तो सवाल सिंपल सा है भाई, एकदम स्टैक की तरह सवाल है. अभी हमने सीखा था, वापस समझाता हूँ. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to maintain a stack of characters and we are going to push elements. Let's say अभी मैं stack empty है. If my stack is empty, मतलब मैं first character पे है, my stack is empty. It means that I cannot compare this A with any elements. क्योंकि मेरे stack में कोई element ही नहीं है. So I'll push this A in my stack. I will move to next character B. Again, if I check the top element मतलब previous element हो, right? So मेरा stack का top element A है. तो मतलब ये दोनों सेम नहीं है. It does not make any sense. सो मैंने बी को भी पुश कर दिया. नाउ लेट मी कम टू नेक्स्ट बी. इफ यू सी, स्टैक का टॉप एलिमेंट इज बी एंड द करंट एलिमेंट इज आल्सो बी. इट मींस दैट प्रीवियस एलिमेंट एंड करंट एलिमेंट इज सेम. और बोला गया था सवाल में, अगर दो कैरेक्टर सेम है एडजेसेंट, तो उनको रिमूव कर दो. आई हैव टू रिमूव दिस पेयर, राइट? इट मींस दैट आई विल रिमूव दिस बी आल्सो एंड आई विल नॉट इंसर्ट दिस बी एंड आई विल कम टू नेक्स्ट एलिमेंट. इफ यू नोटिस, अभी स्टैक का टॉप एलिमेंट ए है, दैट वुड बी इक्वलिंग टू, अगर मैं इस बी वाले पेयर को रिमूव कर दूं, हम लोग यहाँ पे देखो इक्वलेंट, राइट? नाउ सी, स्टैक का टॉप एलिमेंट क्या है? ए. करंट एलिमेंट क्या है? ए. इट मींस दैट प्रीवियस एलिमेंट और करंट एलिमेंट सेम है. इट मींस दैट रिमूव दैट पेयर. इट मींस दैट रिमूव द स्टैक का टॉप एलिमेंट. नाउ मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट. इट इज सी. पुश इट because stack is empty. Now move to next element. Next element is A, but top element is C. It means that both are not same. So it is AC. But our answer is CA. Our answer is not AC. Then how would you return the correct answer? Correct answer is CA. Now you guys tell me. In finally, you are having a stack of characters which are having elements AC. Then how would you get your correct answer? ये बताओ मुझे. It's simple. We'll maintain a string, empty string. We will keep removing top element from the string and push it. So my stack will be having just A after removing top element. Now again I will remove top element and push it. My stack will be A C. मैंने remove किया और string में push कर दिया. Now my string is A C. A C. बट जो एलिमेंट सबसे लास्ट में लिखा गया है, इसका मतलब वो एलिमेंट सबसे पहले आया है. ए ऊपर ऊपर था, ए बाद में आया है. इट मीन्स दैट द स्ट्रिंग विच यू आर हैविंग हियर is reverse of your answer. So when you reverse the string, you will get CA. That is your correct answer. I hope logic is clear. I hope solution is clear to everyone. लॉजिक सबको क्लियर है, सोल्यूशन सबको क्लियर है क्या? बताओ मुझे, किसी को भी डाउट है? लस्त्या, श्रुतिका, दिव्या, आर यू गेटिंग द सोल्यूशन? तुम लोग बताओ. तुम लोग को समझ में आया? क्योंकि बाकी लोग को तो आ गया था. नहीं, देखो वही किया मैंने. आई मेंटेन द स्टैक एंड आई विजिटेड टू ऑल द कैरेक्टर्स. अगर स्टैक लाइक हियर, अगर मैं स्टैक एम्प्टी नहीं है और स्टैक का टॉप एलिमेंट और करंट एलिमेंट सेम है, देन आई विल पॉप दैट एलिमेंट. मैंने पॉप कर दिया. अदरवाइज मैं पुश कर दूंगा. जैसे कि आप पे था, मैं सी पे था, स्टैक एम्प्टी था, सो आई पुश्ड इट. व्हेन आई केम टू ए, मेरा टॉप एलिमेंट सी था, तो मैंने तभी पुश कर दिया. सो मैंने पुश कर दिया. फाइनली my stack is AC, so I will remove all the elements in the top and put into string. Remove all the elements from the stack, put into string. Now मेरा जो string बना है, that is in reverse order. My string is AC, but my answer should be CA. So I have to reverse the string. मैंने इसको reverse किया and I have written it. I hope it is pretty clear. I hope it is pretty clear. ये समझ में आ गया होगा. It was pretty clear. It was pretty easy. Now
Let me ask you a question. Question is pretty simple and it's pretty tricky also. Question is that you are having a bracket sequence. Okay, how many brackets, whether it is opening or closing bracket, you have to insert in the string such that it becomes valuable. Like for this, this is forming a pair, cancelled. This is forming a pair, cancelled. This is forming a pair, cancelled. So if I insert one opening bracket here, then this will also form a pair and get cancelled. So कितने brackets मुझे आंसर इंसर्ट करने पड़े? एक bracket. If I take another example, let's take another example. इसमें बताओ इसमें कितना ब्रैकेट ऐड करना पड़ेगा, ये बताओ मुझे. ओके लेट्स से दिस. बताओ इसमें कितना ब्रैकेट ऐड करना पड़ेगा सोसाइटी वैलिड बन जाए. दो. बताओ कहाँ कहाँ. सिंपल. सी अगर मैं लास्ट में दो ब्रैकेट ऐड कर दूँ, फ्रॉम द पेयर, फ्रॉम द पेयर, फ्रॉम द पेयर, फ्रॉम द पेयर. सवाल समझ में आया? सवाल क्या है? You have to tell number of brackets you have to insert such that your parenthesis sequence becomes a valid parenthesis. Let me ये ट्राई करो तुम लोग. Number of brackets to insert to make it valid. I don't know solution. And it's also pretty easy. It's not that tough. बताओ कैसे करोगे? Okay. Mm-hmm. 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 Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, got it. So, okay, we have to insert the bracket sequence there, right? At that position. Huh, fine. So, we will increase the counter. And exactly. And in the last, you have to also insert stack dot size because you will be left with some opening brackets. Correct. And can you do it in big of one space? If we are taking only simple brackets in consideration. Huh. Because we just need to have a opening and closing bracket counting. That's it, right? Hmm. Hmm. Exactly. Exactly. Now, how many of you were able to solve this problem? किस किससे हो गया था? हैंड रेस करो एक बार. Great. Great. And what about others? What about you guys are facing? What about Divya, Shrutika? What about you guys? तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं बताओ. What problems you are facing? कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हो मुझे. आई एम हियर टू हेल्प यू. ओके. Let me explain this problem and yeah, then we will continue tomorrow with some very interesting problems like inter-specific to be honest. देखो समझो solution का आंसर. ठीक है. And try to respond like respond to try to. अभी ध्यान से समझो. I made a parenthesis sequence here. It is not valid because इस ब्रैकेट के लिए कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, राइट. सो मैं क्या करना रहा हूँ. आई एम गोइंग टू जैसे मैंने पहले किया था, जिससे हम लोग पहले कर रहे थे. आई एम गोइंग टू मेक अ स्टैक, पुश ओपनिंग ब्रैकेट, पुश ओपनिंग ब्रैकेट. नाउ आई केम टू क्लोजिंग ब्रैकेट. तो क्लोजिंग ब्रैकेट पे है.
आई विल कंपेयर फ्रॉम द टॉप, टॉप में ओपनिंग है, पेयर बन गया, रिमूव कर दो, मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट, टॉप में ओपनिंग है, पेयर बन गया. नाउ came to this bracket. This is closing bracket, right? And we do not have any opening bracket for this because my stack is empty. So भाई एक काम करता हूँ ना, मैं आपको एक ओपनिंग पुश कर देता हूँ. देखो पेयर बन गया. जिस जिसकी ब्रैकेट के कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उसके जस्ट बगल एक ओपनिंग या क्लोजिंग पुश कर देता हूँ. इसके लिए मैंने इसके जस्ट बगल एक क्लोजिंग पुश कर दिया, तो एक ब्रैकेट ऐड कर दिया. बट लेट्स से ये होता, ठीक है, लेट्स से ये होता, ठीक है, लेट्स से दिस इज माय ब्रैकेट सीक्वेंस. समझना है से ओपनिंग ब्रैकेट पुश, ओपनिंग ब्रैकेट पुश, क्लोजिंग ब्रैकेट, टॉप में ओपनिंग, पेयर बन गया, पॉप, मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट, क्लोजिंग, टॉप में ओपनिंग, पेयर बन गया, पॉप. My counter is initially counter is 0. Now comes to next. It is closing bracket. For this I want opening bracket, but मेरे stack में कोई opening bracket है ही नहीं, right? It means that to make it a valid, I will just simply add one opening parenthesis. So मैंने कितने bracket add किए? एक bracket add किया. So my counter is increased by 1. Move to next bracket sequence. Opening. Opening मतलब push. मैंने push कर दिया. अब मैंने पूरे string को traverse कर लिया. अगर मैं यहाँ पे एक ओपनिंग पुश करता हूँ, स्टिल इट इज नॉट वैलिड बिकॉज फॉर दिस ओपनिंग ब्रैकेट वी डू नॉट हैव एनी क्लोजिंग ब्रैकेट. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन नॉर्मली हैव अ क्लोजिंग ब्रैकेट हियर. गॉट इट? लेट्स से अपने पास ऐसे तीन चार ओपनिंग होती है, जैसे अपने पास ऐसे तीन चार ओपनिंग होते, राइट? सो मेरे पास यहाँ पे तीन होते टोटल. तो मुझे इसको वैलिड बनाने के लिए क्या करना होता, इसके जस्ट बगल एक एक क्लोजिंग पुश करना होता. इसका मतलब ये है कि आखिरी में जितने ओपनिंग ब्रैकेट्स बचे उन सब के जस्ट बगल हमें क्लोजिंग पुश करना है, और बीच में जितने भी क्लोजिंग ब्रैकेट हैं जिनके लिए अपने पास ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, उनके लिए उनके बगल में एक ओपनिंग पुश करना है. आई होप इट इज क्लियर. अब समझ में आया तुम लोग को दिव्या श्रुति का प्रश्न? अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन. आई होप मैंने उसी से किया जिसमें एक्सप्लेन किया. क्या मैंने वही किया जो मैंने बताया है? वही किया है मैंने. देखो ओपनिंग ब्रैकेट है तो स्टैक में पुश कर दिया. अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है जैसे कि ये क्लोजिंग ब्रैकेट था, इसके लिए अपने पास कोई ओपनिंग नहीं था, स्टैक क्योंकि एम्प्टी था. सो आई विल सिंपली डू काउंटर प्लस प्लस, और सबको आखिर में तीन ओपनिंग आए थे, सो मैं तीन ओपनिंग पुश कर दिया यहाँ पे. एंड फाइनली मेरा स्टैक का साइज 3 है, मतलब ये तीन ओपनिंग ब्रैकेट्स के लिए अपने पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है. सो आई विल जस्ट ऐड 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स. सो काउंटर इनिशियली 1 था, 3 और ऐड किए तो काउंटर 1 प्लस 3 हो गया. दैट इज काउंटर प्लस इज इक्वल टू स्टैक का साइज. दैट्स इट. अब समझ में आ गया? नाउ योर होम असाइनमेंट वुड बी doing it in big of one space complexity. And one more home assignment I would be giving. This is tricky one. Uh, number of ways to make valid parentheses. Okay, we can do this one. वो कैटलन नंबर है. No, okay, this is okay. You can do this one also. It is also same thing only. Okay. So let's in the class today. If you are having any doubts, you can be here, ask me doubts, clear your doubts. If you are not having any doubts, you can leave the session. आज सेशन नहीं खत्म है. Tomorrow we are going to do some more advanced on stacks.